So, hello everyone, welcome back to my YouTube channel. My name is Muskan Agarwal and we have Jugal with us today. So, Jugal has received an off campus internship at FamPay, and this video is going to be about his interview experience. So, before starting, Jugal, can you give us a brief introduction about yourself? Sure. Muskan just mentioned that I recently received an offer from FamPay for the role of backend engineering intern. So I started a couple of weeks ago. The last 2 weeks have been amazing. Everyone over there is pretty friendly and welcoming towards every new member, whether that's intern or a full-time employee. And just to give a more brief about FamPay itself, they usually don't have any such hierarchy that if you're an intern, you cannot work on certain projects. So, me being an intern, the projects that they give out to us are usually towards what actually people would use and not something to do with internal tools. So, yeah, that's pretty much about me and what I'm currently doing at FamPay. Okay. So now my second question is, as I mentioned कि ये off campus opportunity थी. So can you tell us कि how did you get to know about the opportunity and what were the various steps that were involved before you got the final offer? Opportunity I got it via Twitter, which seems strange. People usually get it on LinkedIn and stuff like that. But I saw one of my friends from college, like he also works at FamPay, posting that they are hiring. I told okay, let's apply. क्या ही जा रहा है? Anyways, I don't really have anything to lose as such. So मैं बोला I'll apply. And basically, the application process was fairly simple. You fill out a form which just asks for your resume and which position you're applying for. They like your resume and अगर उनको अच्छा लगता है सब चीज़ें your experience and what you have done till now as projects, so they reach back to you with an assignment. That assignment can be like काफी varied होती है. So for example, if you're applying for backend position, it can have something to do with the fundamentals of backend. वो मैटर नहीं करता तुम कौन सी लैंग्वेज में वो असाइनमेंट करो, तुम सी प्लस प्लस में करो, मतलब ऑफकोर्स सी प्लस प्लस में कोई नहीं करेगा, बट इफ यू वांट टू डू इट इन एनी लैंग्वेज ऑफ एनी सॉर्ट तुम वो कर सकते हो. यू जस्ट नीड टू शो कि जो एक्चुअल में कंसेप्ट पूछे यू आर थरो विद दोस कंसेप्ट्स एज सच. तो उसके सिवाय कोई भी टूल्स यूज करो, इट्स completely fine. You just need to submit them a Git repository in the end with proper documentation of everything. So that was the first one, which was assignment, and then it goes to the tech team. अगर उनको पसंद आती है तुम्हारी assignments and everything, so they reach back to you saying, okay, we would like to have an interview with you. Interview round. First of all, before assignment, just to understand ki how are you as a person and would you actually, be open to working for whatever they ask for, जो role के requirements है वो सब समझने के लिए the recruiter calls you on phone and sets up a meeting for about 30 minutes. उसमें you basically understand कि job के requirements क्या है, तुम क्या करोगे actually में, and if it actually matches with you. So if that happens, then only you move to the next round of interview. Once you move on to the second round or the first technical round, they talk to you a bit more about what you had done in your assignment. तुमने X चीज की है तो तुमने वो क्यों की थी, तुमने ये टूल यूज किया तो क्यों यूज किया. तो बेसिकली ट्राइंग टू अंडरस्टैंड योर परसेप्शन, क्या क्या किया और क्यों किया. ट्राइंग टू अंडर एक और लाइक दे आस्क मी दिस वन थिंग, फॉर एग्जांपल अगर मैंने ये चीज की तो मैंने यही क्यों यूज की, इसका एक ऑल्टरनेटिव मेरे को भी पता था उस टाइम पे एंड दे आल्सो न्यू. सो दे आस्क मी के व्हाई डिडंट यू यूज the other thing instead of using the first thing. Basically need to defend what you did, and after that there is a one very small and short simple coding challenge which is not necessary, but they don't judge you on the basis of whether all the test cases pass या नहीं. तो you mentioned that there is a question round मतलब जिसमें कि तुझसे DSA पूछते हैं. So if you can specify maybe not the exact questions but the type of questions that they might ask and what strategy did you follow when you were writing the code for them? I wouldn't put it as कि वो लोग DSA पूछते हैं, क्योंकि in general it's a startup but a bit of established startup. तो DSA usually Microsoft, Amazon ये सब ज़्यादा पूछते हैं. So it's not hardcore DSA as such, but वो कहीं समझ आता है कि तुम्हारी अप्रोच क्या है किसी को. तो फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन अगर तुम ले लो, एक क्लास बनाओ जिसमें तुम बेसिकली यूजर से डेटा लोगे और उसको स्टोर करोगे, तुम्हें रिट्रीव भी करना है उसको डेटा को बाद में, कि यूजर को एक वजह रिक्वायरमेंट्स दे देंगे, ये रिक्वायरमेंट्स है, तो यूजर को कैसे डेटा दोगे, किस फॉर्मेट में स्टोर करोगे, ऐसे टाइप के क्वेश्चन होते हैं. तो बेसिकली कोई कहीं पे स्टोर कर सकता है, कोई किसी डेटाबेस में स्टोर करे, कोई हैश मैप बना सकता है, कोई की वैल्यू पेयर बनाए. तो देयर कैन बी नंबर ऑफ अप्रोचेस. सो वो लोग
अगेन एज आई सेड कि वो तुम्हारा असाइनमेंट को जैसे करते हैं वैसे इसमें भी करेंगे कि दे सी कि तुमने एक कोई डेटा स्ट्रक्चर या कुछ एक डेटा स्टोर टाइप यूज किया है, वो क्यों यूज किया है, एंड दे ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाइल यू आर थिंकिंग आउट लाउड। तो तुम्हें थिंक आउट लाउड करना होता है इसमें, एंड दे सी कि तुम कैसे सोच रहे हो, कौन सी अप्रोच ले रहे हो। सो इट्स नॉट नेसेसरी कि तुम सही आंसर पे आओ या तुम्हारा आंसर चले भी, तुम्हारा कोड चले भी, बट अगर उनको लगे कि तुम्हारी अप्रोच सही है तो दे कंसिडर, एज फार एज आई नो, जितने लोगों का मैंने सुना जो मेरे साथ इंटरव्यू दे रहे थे, दे स्टिल कंसिडर कि हाँ ओके योर अप्रोच इज गुड इनफ, तो ठीक है यू आर अ गुड कैंडिडेट फॉर अस। एंड इसके बाद द सेकंड राउंड बेसिकली एंड्स देयर विद देम सेइंग के ठीक है विल गेट बैक टू यू एंड वी लाइक योर असाइनमेंट एंड स्टफ लाइक दैट। Again, the interview process is very friendly. If you get stuck at some place, so they try to help you out by giving you very little subtle hints, which may or may not be necessary, but they do that. At the second technical round or the third interview round, so this is not the last round, but technical में last round होता है। तो इसमें the scene is you talk with one of the very senior members in the team, engineering team में, and they basically ask you questions around your resume कि तुमने क्या क्या किया है पिछ पहले। तो अब it's not a very simple resume round, बाकी सब जगह पे होता है वैसा, but they ask you about your experience at one place, for example उसमें तुमको पूछेंगे कि तुमने क्या किया, then they'll ask you कि अगर चलिए ना तुमने ये किया तो तुमने कौन से टूल्स यूज किए थे, अगर तुमने XYZ टूल्स यूज किए थे तो क्यों यूज किए थे। So you need to be open and honest, basically contribution in that particular experience, क्योंकि if you try to get around by कुछ अगर कुछ तुमने झूठ बोल दिया कि हाँ मैंने ये भी किया था, अगर तुमने कुछ फेंकने की ट्राई की तो इट माइट बी पॉसिबल कि they'll ask you questions on that which you may not know the answer to, और वो तुम्हारे इंप्रेशन पे खराब पड़ेगा कि अगर तुमने काम किया है इस पे तो तुमको पता होना चाहिए कि एटलीस्ट किस तरीके से काम किया था। That is something which happens in second round. Or second round towards the end, there is one system design question because infrastructure is the main thing which they are building right now, and they are looking for people with good knowledge of infrastructure. So system design में basically, and coming to your question कि interview में पूछते क्या है, तो system design वाले questions में ये पूछते हैं बेसिकली कि फॉर एग्जांपल तुम्हें एक रिक्वायरमेंट दे देंगे कि एक ऐप बनाओ गूगल कैलेंडर जैसा, फिर स्प्लिट वाइज जैसा, या फिर आईफोन के नोट्स ऐप जैसा, या कैसा भी एक छोटा सा एप्लीकेशन डिजाइन करो, उसमें डेटाबेस स्कीमा डिजाइन करो, एंड उसको तुम कैसे सिस्टम बनाओगे उसके अराउंड कि वो यूजर तक जा सके, मतलब जो वो तुम्हारा एपीआईज है या जो भी है वो यूजर तक कैसे, तो ये ऐसे टाइप के क्वेश्चन होते हैं। एंड दैट इज प्रीटी मच इट फॉर दैट राउंड। अगर वो तुमने अच्छे से कर लिया तो then you are shortlisted for one very very small round of 35 minutes which is cultural fit। तो उसमें यही होता है कि तुम्हें तुम्हारी जो वैल्यूज है दे टेस्ट दैट कि हाँ अगर मेरे में टीम वर्क एज अ वैल्यू है तो दे अप्रिशिएट इट, बट अगर तुम में टीम वर्क एज अ वैल्यू नहीं है फॉर एग्जांपल तो कोई कंपनी अप्रिशिएट नहीं कर सकती इस चीज़। इसके अराउंड क्वेश्चन आते हैं कि तुमने पास्ट में किस तरीके के काम किए है, टीम्स में कैसे काम किए है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो उस तरीके वो दे ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट टाइप ऑफ कल्चर हैव यू बीन वर्किंग इन, और फिर वो उनके ऊपर एक डिसीजन लेते हैं कि वुड यू बी एबल टू फिट इन। लकी फॉर मी मेरे साथ क्या हुआ था कि वंस माई कॉल एंडेड, ये पर्टिकुलर कॉल, people usually receive their final result in 1 or 2 days, but since weekend आ रहा था, my call was on a Friday, since weekend आ रहा था तो they informed me on that day itself that I got in, and so that was pretty much the entire journey. That seems like a pretty elaborate procedure. मतलब काफी सारे technical interviews and assessments भी थे. If you have to rate the overall difficulty level from easy, medium or hard, so what would it be? Okay, I'll divide the interviews. So first interview I would put it as easy. Second round, which is your resume and defense of what you have done, I would put it as medium to semi hard. And cultural fit is again just you talking and being open with them. So I cannot rate the difficulty, but so the entire process would be somewhere around medium or somewhere bit towards easy, but not very very easy. So we can say it as medium. Yeah. Because system design is something that not every student is aware of, right? Yeah. So what resources did you follow to clear that round? Yeah, so I didn't follow any resources as such, but what in my experience what I've done अभी तक, तो मेरे यूजुअली जितनी भी इंटर्नशिप्स रही है those are in startups। तो स्टार्टअप्स जनरली ऐसा कल्चर होता है कि जो बैक एंड डेवलपर होता है वही पूरा तुम्हारा सिस्टम संभालता है, एंड दे ओनली हैंडल कि कौन सी एपीआई किधर से राउट होगी एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो आई हैड फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस विद दैट व्हिच हेल्प मी, and if you do need a resource then
there's this book, I don't remember the exact name. I'll probably send you a link which you can put it in the description. So it's for system design only. So it basically says कि तुम्हें रेट लिमिटिंग कैसे संभालनी चाहिए, एक्स टाइप के सिस्टम्स में क्या करना चाहिए, अगर बहुत ज़्यादा स्केल है तो क्या करना चाहिए. तो there's this book which I read back in my second year. So that book is a very very elaborate thing, and if you want to do anything related to system design, that's my go-to book. So yeah. So the next thing is resume. As you mentioned that first of all you had to upload the resume in the form. So what are your tips? Like what did you follow while you were making your resume? Yeah, so okay, this is a question which has no correct answer मेरे हिसाब से, but अलग अलग लोगों के अलग अलग opinions होते हैं. So the thing which I follow, मैं जिधर भी apply कर रहा हूँ with my resume, is to try and frame the resume around what that company does. So जैसे I am lucky to have so many internships मेरे work experience के अंदर कि I can shuffle them around, but अब कुछ लोगों के पास नहीं होती. तो what the best thing to do is स्टडी अप व्हाट अ कंपनी डज, उनके रिक्वायरमेंट्स क्या है, वो किस तरीके का टेक स्टैक फॉलो करते हैं. यू कैन फाइंड इट ऑनलाइन एनीवेयर. अब जरूरी नहीं है कि तुम जॉब रिक्वायरमेंट्स जो है उसको तुम मीट करो, बट सो व्हाट आई डिड वाज, they're a very fast moving company. I know FamPay is a very fast moving company since it's a startup, and I also knew कि उनका जो main, they are slowly but surely shifting towards microservices. I knew about this because I read an article उनके ही एक engineering team के members से. So I read about the company, and then I tried to include those experiences on the top. Well, not, of course you list your experiences in chronological order, but put more emphasis on those experiences जिसमें मैंने around systems या फिर around microservices ज़्यादा काम किया हो, and just make it on top so that they know कि हाँ you know about these things and तुम इधर काम कर सकते हो if given a short an interview. So just try to bake your resume around what a company does and what they're moving towards. And talking about the chronology, like what did you follow? कि सब पहले work experience या पहले achievements, and what did you Yeah, follow? I have two resume templates. One of I usually shuffle around in different companies. So the one which I followed for this, it had first of all my details. Then it had the skills that I have before anything else. List down the skills. कि ठीक है, I know React, I know Node.js, I know Django, for example. वो सारी skills listed थी. Then I listed my work experience, and then came projects, and in the end I put achievements because I know FamPay is a very very fast moving company, and they don't, if I have the necessary skill set, they won't care कि मैंने कितने hackathons जीते, for example. So even if I put it in the last, it's kind of a no brainer कि वो लोग पहले मेरी work experience देखना चाहेंगे. So yeah. If you would like to give any tips for the students, because मैं LinkedIn पे देखती रहती हूँ, FamPay is actively hiring for the front end as well as back end roles. So if any student has their interviews lined up, so अगर तुम्हारे पास कोई tips है for them, what would it be? So the first and foremost tip is, they, as I said, they don't really care about कि तुम्हें कितना core DS याद. Of course, you need to know a bit about algorithms and stuff, but they don't look out for core DS. So don't get in the trap. If you're particularly only aiming for FamPay or startups, don't particularly aim for core DS कि हाँ नहीं मेरे को DS आना चाहिए. ऐसा जरूरी नहीं है. Just aim कि तुम्हारे पास जो already skill sets है जो तुमने list की अपने resume में, वो तुम्हें एकदम अच्छे से आती हो, एंड जस्ट ब्रश अप ऑन दो स्किल्स. कभी कभी ऐसा होता है कि ठीक है मेरे को जावास्क्रिप्ट भी आती है, मेरे को जावा भी आती है, बट मैं जावा बहुत टाइम से की नहीं होगी, तो मेरा थोड़ा आई माइट हैव लॉस्ट टच. तो मेक श्योर कि तुमने जो रेज्यूमे में मेंशन की है उसके साथ तुम्हारा टच, यू आर इन टच एंड यू नो अबाउट देम, एंड जस्ट बी वोकल अबाउट योर थॉट्स. मैंने काफी देखा है कि कुछ कुछ लोग जब दे आर गिवन अ लाइव कोडिंग असाइनमेंट, टेंड टू अपने छोटे बबल में खुद ही थिंक करते रहो एंड कुछ भी टाइप करते रहो. जस्ट से आउट योर थॉट्स आउट. भले तुम गलत आंसर पे आओगे, बट इफ यू टेल देम योर थॉट प्रोसेस, तुम कैसे किधर आए, इट्स देयर इज अ चांस अगर तुम्हारा आंसर गलत हो फिर भी दे माइट लाइक योर थॉट प्रोसेस, बिकॉज इट्स नॉट पॉसिबल कि हमेशा जब तुम काम करो तो तुम्हारे सही थॉट्स आए. So I would suggest just be vocal about your thoughts and just brush up on whatever you have done till now. But एक चीज और I would like to ask that what do you think is better, working in a startup or working in a well-established company? Since I can see a lot of buzz around that, like हर जगह पे Twitter या LinkedIn या YouTube पर. So what are your views on that? I personally haven't worked in a very big established firm yet,
but I've seen my friends do. So from my experience and from what I have noticed, if you like building things for the people, like for people to use it, go for a startup, because that's the place where you can see your code, or where you can see your executed scripts being run live for people and you can see their response. But if you want to take things slow and learn a bit more about basics and work on tools which may or may not be used by the people, then go for a established firm. So yeah, that's my thoughts on it. Okay, that's really great. Okay, with this, we come to the end of this video. Thank you so much for coming onto my channel and sharing your experience. It was really great talking to you. Thank you. Bye.